Good morning. Myself Subodh sir. Welcoming all the students of class 9. Today in this class we are going to discuss the geography chapter 2, and chapter 2 is the physical features of India. What are the physical features? Physical feature, whatever we say, it is a formation of mountain, it is a formation of plain, it is a formation of lakes, or whatever is there, all comes under the physical features. Now question comes, who has made all these physical features? किसने बना? And how it has been become? Is there any force? If the term force comes, we can say yes, it is a natural force. And if the terms natural force comes, we can further classify it into two groups. One is exogenic force, another one is force. Exogenic force is the force that acts on the surface of the earth. The features made by the force that is acting on the surface of the earth, it is called exogenic force. क्या हो सकता है? You might have read in class 7, just I am recalling it to you. Just see, when the river flows, what type of features are being made by the river? Can you remember it? The features made by the river, main features. It forms valley. It also forms oxbow lake. It also forms flood plain. It also forms delta. Many would be, but in few we saying the work of the river, it is exogenic force. It forms the valley, it forms oxbow lake, it forms the floodplains, it forms the delta. Why I am writing this thing? The things that you might have read in the junior classes, class 7, it might have been reflecting quickly आ रहा होगा दिमाग में, yes हाँ ये तो हो रहा है. These are the exogenic force. बाहर से हुआ, नदी बही, स्पीड फ्लो ऑफ वाटर, रिसीड किया, डेल्टा बन गया, लास्ट में शुरू में चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा, तो मेंडर्स, और जो मेंडर कट ऑफ हो गया, इट वाज फॉर्मिंग द ऑक्सबो लेक. इसने क्या बना दिया? ऑक्सबो. Then the flood plains, when the flood comes, they deposit the sediments on their banks, and later on it is formed the floodplains. And the delta at the mouth of the river, when the speed of the river decreases so much that it cannot carry the sediments with it, so sediments get deposited and it forms almost triangular shape of the structure. It is called delta. It means all the features that were made by the river, it is due to the surface of the, it is called exogenic force. You might have read also. The ocean,
C stop, C clip, which is etc. C cape, C stop, C clip, beaches, mini mermaid. These all are the features that is made by the ocean. It is again the external force, means exogenic force. These features has been made by the ocean exogenic force. Then you might have it, the work of the wind. What is the work of the wind? Wind क्या क्या बनाता है? One, mushroom rocks. Do you remember mushroom rocks? Then it also forms the sand dunes. Yes. ये जो कहीं कहीं पर दिखाई देगा मशरूम के टाइप का रॉक कटा हुआ है, ये एक्सटर्नल फोर्स विंड के कारण हुआ है. This features comes under the exogenic force or external force. Then we have also the glacier. It forms the basically lake. नैनीताल का जो लेक बना है ग्लेशियर ओरिजिन का है. It also form the moraines, ले जाकर कहीं न कहीं डिपॉजिट कर देगा. It means ये सारा features that we find onto the earth's surface, it is due to the exogenic forces. बाहर से जो लगा है फोर्स उसके कारण हुआ है. Then we have endogenic forces also, जो अर्थ के अंदर से फोर्स आती है. फॉर्मेशन ऑफ रिज, formation of trenches, formation of mountain. All these features are, earthquake also comes. All these features are due to the endogenic forces. River we know, पता है कारण. It goes from the high level to low level. स्पीड के कारण, स्पीड बढ़ेगा तो कुछ फीचर, स्पीड कम हो रहा तो कुछ और फीचर्स. ओशियन, द सेम थिंग हैपन इन ओशियंस. सी वेव, किनारे तक आते हैं तो वेव की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है. इट फॉर्म्स अ डिफरेंट शेप. विंड स्पीड, इट मेक्स द इरोजनल वर्क. ड्यू टू दिस इरोजनल वर्क मशरूम रॉक्स आर फॉर्म. विंड अपने साथ सैंड को ले गया, कहीं पर पहाड़ की तरफ खड़ा कर रख दिया, जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, सैंड ड्यून्स हो गया. मेनी फीचर्स आते हैं. क्रिसेंट मून टाइप होगा तुमको, बार्चेन मिलेगा वो लोग पढ़ेंगे इसमें. और ग्लेशियर, इट फॉर्म्स द स्पेशल लेक एंड द मोरेन्स. इट मींस दीज आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस. वी हैव गॉट द कॉजेस ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस. नाउ व्हाट आर द एंडोजेनिक फोर्सेस? टू अंडरस्टैंड द एंडोजेनिक फोर्सेस वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द. Let us first start. I hope you have got what are the exogenic forces and how the exogenic forces are responsible for the different types of features. We will discuss in the feature later on. First, we have discussed what are the causes of these physical features of physical change. One that we have done it. One was the exogenic force. To understand the endogenic forces, we must try to understand the structure of the interior of the earth. अंदर से कहां से आ रही फोर्स?
ये फोर्स कहाँ से आ रही है उसको समझने के लिए हमको अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये भी आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। इट मीन्स अ लिटिल बिट आई एम रिफाइनिंग इट। I have just drawn a rough structure of Earth. Actually, it is not the exact structure of the Earth because Earth is flattened at the northern and the southern hemisphere. दोनों जगह flattened का form में है. To make understand easy, we have drawn it. In physics, we will go through it. The radius of the Earth at the equator and from center to pole is different. Gravitation chapter में पढ़ाया जाता है. But for understanding it, we have drawn a sphere structure, a spherical. If it is a sphere, mathematics say that it must have the center. तो इस sphere का कहीं न कहीं center होगा. अब center हो गया तो ये radius हो गया. I do hope you have understood it. ये जो radius है, ये radius है 6,371 kilometers. But we take it roughly, we take it 6,400 kilometers. For calculations in physics, you have to go gravitations, many numericals you have to solve it. So what we take the radius of the Earth a little bit, 6,400 kilometers. Now come to the what is the comes under the interior of the Earth. (6,371 kilometers. इसका a little bit more than maybe 54% around 55 maybe. It is the interior structure. It is 3,486 if we draw a diagram over here. Suppose that if we have taken it of 6 centimeter, then it should be a little bit more than the 3 centimeter. It is around 3,486 kilometers. It is core. It is the core, and core is made up of knife. Knife means nickel and ferrous. Knife, it is the nickel and ferrous. It is in the solid state. Now, the another structures. Mental. (2,885 kilometers. 2,885 का ये लगभग क्रस्ट पे आ गया ऊपरी से. It is molten, viscous
silicate rocks. It is molten, viscous, viscous हो गया थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा टाइप का. हनी को देखिए आप, शहद वो तो मोल्टेन स्टेट में है ना, लेकिन गाढ़ा है, वो थोड़ा सा स्लो में फ्लो करता है. It is silicate rocks. The materials that is coming from the interior of the earth, it has been studied and found into the silicate rocks. The upper portion of the earth, it is crust. क्रस्ट देखो, यहाँ पर पतला, यहाँ पर मोटा है. ये जो हो जाएगा ओशियनिक बेड, यहाँ पे ये लगभग 5 किलोमीटर थिक, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कॉन्टिनेंटल crust, it ranges from 30 to 40 kilometers, but we take average as a 35 kilometers. अब ये जो molten magma, that is the molten state में है, this molten magma makes a convection current, transform of heat पढ़ा होगा, conduction, convection and the radiation. In convection current or convection cell, the hotter parts rises up and colder parts sink. जो गर्म होगा वो उठता है, जो ठंडा होगा वो सिंक करता है. This convection current has made this continental crust, means this crust, to move. This crust, this convection current has made the crust to move. अब जो crust है, it is not a single piece. It is in the different forms. अब इतना तो समझ में आ गया है कि मेंटल में कन्वेक्शन करंट टेक प्लेस करता है, और इस कन्वेक्शन करंट के कारण, ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट, द लिथोस्फीरिक प्लेट मूव्स. It has been broken down. I do hope till you have got it. Now I am giving another idea. If you see the world map, you find all the continents are at the different places. But millions of years ago, maybe trillions of years ago, all the continents were at one place. These continents were at one place. एक ही जगह था सर. अलग कैसे हो गया? Just we have discussed the convection current in the magma. ये जो पहला Pangaea, when it was broken down, तो दो बिग लैंड मास में टुकड़ा हुआ, दो बड़ा सा टुकड़ा बना. ये टुकड़ा जो एक था,
Laurasia. You can see it was the continent of northern hemisphere. It was the supercontinent of northern hemisphere. It do not remain the same. It was also by breaking down. ये टूटा तो क्या हुआ? ये फर्दर ब्रेक डाउन हो गया तो बना तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका. हम इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन पहले अंडरस्टैंड तो होना चाहिए ना. नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, एक्सक्लूडिंग इंडिया. इंडिया को छोड़ के, इंडिया इसका पार्ट नहीं था. ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. when we will going through the structure of the parts. Pangea breakdown हो गया दो पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट लॉरेशिया, इट वाज द सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये फर्दर टूटा तो क्या बना? ये फर्दर टूटा तो बना ये नॉर्थ अमेरिका बना, ये बना ग्रीनलैंड बना, ये बना यूरोप, ये बना एशिया. यूरोप एशिया एक ही जगह आ गया. इट इज नाउ कॉल्ड यूरेशिया. एशिया में इंडिया नहीं था. इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साउथ एशिया. ये जो इंडिया है इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थर्न सुपर कॉन्टिनेंट. नॉर्थ का हिस्सा नहीं था. ओके सर, हम तो पढ़े हैं कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बाद में डिस्कस करेंगे नॉर्थ में कैसे पहुंच गया. देन तो गोंडवाना लैंड, it can be said the continent of, it was the supercontinent of southern it was the supercontinent of the southern hemisphere. ये टूटा तो क्या था? ये भी ब्रेकडाउन हो तो बना ये टूटा तो अफ्रीका बना, ये बना अमेरिका बना, यहां बना इंडिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका. एक पैंजिया ब्रेकडाउन हो गया तो एक सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. लॉरेशिया टूटा, सुपर कॉन्टिनेंट ये क्या बनाया? नॉर्थ अमेरिका. जस्ट सी द वर्ल्ड मैप. नॉर्थ अमेरिका इज देयर, ग्रीनलैंड, यू विल फाइंड इट आउट, यूरोप, एशिया. एशिया में इंडिया नहीं था, इसलिए समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया एक्सक्लूडिंग इंडिया, मींस इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सुपर कॉन्टिनेंट. देन द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट इट वाज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड. व्हेन इट वाज फर्दर ब्रोकन डाउन it was from the Africa, South America, India, Australia and Antarctica. ये जो बिग टुकड़ा हुआ, मतलब कि एक कोई प्लेट है बिग, उसको ऊपर से छोड़ो नीचे गिर जाएगा तो टुकड़ा तो बनेगा. लेकिन समझ लो अर्थ भी उसी तरह टुकड़ा. इसमें 7 बिग पीसेस था. ये जो 7 बिग पीसेस था क्रस्ट का, These came to be known as the tectonic plates. ये जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था,
ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट बना, और जो टुकड़ा बन गया तो ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इट वाज फ्लोटिंग, मूव कर रहा था। अब ये टुकड़ा कौन कौन सा था? These 7 tectonic plates, which were the 7 major tectonic plates. The 7 major tectonic plates were onwards. Eurasian plate. This is a very big plate. Today contains यूरोप एंड एशिया। जो कॉन्टिनेंट हमारा है ये एक प्लेट में है। दिस प्लेट इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। उसके नीचे अनदर प्लेट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऊपर से अगर उठा लिया जाए तो एक तरफ इंडिया देखाएगा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, बीच में जो आइलैंड ग्रुप से छोटा कंट्री आएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक सब ऊपर चला सकता है। देन वी हैव द थर्ड अफ्रीकन प्लेट। थर्ड प्लेट इज अफ्रीकन प्लेट। Then we have North American plate. Then we have South plate. North American plate. Then we have the South American plate. देन ऊपर से हो गया यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोप के नीचे हो गया अफ्रीकन प्लेट, और सा लेफ्ट में जाइए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नीचे आ रहा है सबसे साउथ में अंटार्कटिक प्लेट, और एक और हो जाएगा Pacific plate. The important plates that we have got, which are the important plates? We have got the Eurasian plate, we have got the Indo-Australian plate, we have got the African plate, we have got the North American plate, we have got the South American plate, we have got the Antarctic plate, and we have got the Pacific plate. These plate moves. And when these plate moves, different type of structures are formed or features are formed. What makes these plates to move? Simply the convection current in the mantle. Convection current in the mantle makes these plates to move. Now we have got the plate movement. Different types of plate movement. We have discussed the plate moves and what are the causes of the movement of the plate. The convection current in the mantle. Mantle में क्या है? Magma है, it is in the form of silicate rocks. When the plate moves, it has a 3 type of movement. One is convergent boundary. One is divergent boundary, one is transform boundary. Convergent जब एक दूसरे के तरफ जाए, डाइवर्जेंट जब एक दूसरे से दूर जाएगा, और ट्रांसफॉर्म
जब एक दूसरे को स्लाइड करें. कन्वर्जेंट कमिंग क्लोज टू ईच अदर. डाइवर्जेंट going away from the two plates, moving of the two plates and transform when they slide. I have already written what are the features that is formed by the convergent boundary. One is oceanic trench. Trench हो जाएगा खाई. When the two plates come closer to each other, then when they collide, one goes beneath the another. एक दूसरे के नीचे में चला जाता है. For example, if this is a plate coming, another plate will come. It will start sinking. ये जो पार्ट्स है उसमें डेप यही कहलाएगा ट्रेंच. एक के नीचे दूसरा शुरू होना हो जाएगा तो थोड़ा सा V शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है. When it is creating a V shape structure beneath the ocean, it is called oceanic trench या ocean trench. We have the deepest ocean trench in Pacific Ocean. Can you remember it? It was Mariana Trench. It is meters, 11,032 meters. मतलब कि ये एवरेस्ट से भी ज्यादा डीप है. इट इज इवन डीपर देन एवरेस्ट का. कितना है? 8,000. एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,850, 4850 चलता है. 8,850 मीटर्स. ये तो इसमें डूब जाएगा. ये भी एक फीचर्स है दैट इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंट बाउंड्री. इट इज ऑल्सो फॉर्म द माउंटेन. अगर मान लिया कि दो प्लेट नजदीक आ रही है, two plates are coming closer, बीच में sedimentary rocks हैं, it has been folded and forming the mountain. We have 4 fold mountains in the world. One is at the boundary of India also. We will discuss later in this chapter. Himalaya is also an example of fold mountain. It has come due to the convergent boundary. Island has also been created on the same base. Island भी बना. तो what type of features are formed by the convergent boundary? Convergent boundary forms the oceanic trench, it forms the mountain, it forms the island. Divergent जब पता है दूर जाए तो बीच में कुछ ना कुछ तो गड्ढा बन जाए, खाई तो हो ही जाएगा. This is called rift valley. अगर बाई चांस ये स्पेस बन गया and the molten magma from the inside coming out, तो ऊपर तो पानी है, अब पानी है तो कूल डाउन हो जाएगा. तो इट विल फॉर्म ए रेंज ऑफ माउंटेन इनसाइड द ओशियन. उसके अंदर में एक माउंटेन का रेंज बनेगा. दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड रिज. मींस माउंटेन रेंज इन ओशियन. वाटर बॉडी नहीं लिखेंगे तो संदर्भ में तो नहीं मिलता है. माउंटेन रेंज इन ओशियन. कैन यू रिमेंबर which is the world's highest mountain? If I ask you, your answer will be, sir, the highest peak in the world is Mount Everest. But there is one mountain which height is higher than the Mount Everest. You may ask, sir, सुना तो है नहीं है. It is Mount Kia. The height of Mount Kia is higher than the Mount Everest. Still, it is not considered the highest mountain because we measure the height from the ocean level. Ocean level से ऊपर होगा तो मेजर करेंगे. ये तो ओशियन के अंदर में.
हाइट ऑफ माउंट किया, माउंट एवरेस्ट को ले जाकर मरियाना ट्रेंच में डाल देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, उसको पता चलेगा बड़ा ही नहीं, इतना बड़ा मरियाना ट्रेंच है। माउंट किया इज द माउंटेन, द पार्ट ऑफ रेंज, इट्स हाइट इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट, still it is not considered, it has been formed due to movement of the tectonic plate. This convergent boundary, another thing that features forms, it brings the earthquake. Just press your hand in such a way very hard, you will find this middle part shakes. So it means when the two plates meet, they press each other, it means there are lot of energy generated, and this lot of energy is raised for vibration, and when this vibration comes, we say it is our earthquake. Divergent boundary also cause the volcanic eruption, ये रेज भी उसी का नहीं होता है, और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री brings the earthquake. It means we have got the three types of plate movement which are responsible for the endogenic forces, and what type of features are formed by the endogenic forces. We have also studied about the exogenic forces and what are the features that are formed by the exogenic forces. In the next class we will study the physiographic features of India. Till now, go through these videos very carefully and try to understand what are endogenic forces, exogenic forces, and how it helps in changing the features of a continent. Thank you.